तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर, जहाँ आपको रेगुलर जॉब अपडेट्स मिलती रहती है। तो आज जिस जॉब की हम बात कर रहे हैं वो सबसे बड़ी बात तो है वर्क फ्रॉम होम है। दूसरा, इसमें आप अप टू 1500 USD मतलब $1500 तक की अर्निंग कर सकते हो एवरेज। अगर हम बात करें $1 की, तो $1 होता है लगभग 83 रुपीज़, और हम उसको अगर 1500 करें तो मतलब लगभग लगभग 1,24,000 तक की आप इनकम जनरेट कर सकते हो पर मंथ, वो भी वर्क फ्रॉम होम अपने टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है ड्रीमपोर्ट। ड्रीमपोर्ट हायर कर रही है, वैकेंसीज निकाली हुई है वर्क फ्रॉम होम के लिए। पार्ट टाइम भी आप काम कर सकते हो, जो स्टूडेंट्स है या हाउसवाइफ्स है वो भी अच्छी खासी इनकम इससे जनरेट कर सकते हैं। हम आपके सामने अप्लाई करेंगे और इसके लाइव टेस्ट आंसर जो भी होंगे वो भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपनी क्या ऑफ़र कर रही है जो हायर होने वाले उनके लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर इंडिपेंडेंट ट्रैवल मैनेजर्स। एक ट्रैवल मैनेजमेंट की जॉब रहने वाली है। लर्न फॉर फ्री, ट्रेन फॉर फ्री, अर्न अप टू 1500 USD ऑन एवरेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कितना है, 1,24,000। 1,24,000 छोड़ो, अगर हम ऑन एवरेज देखिए इसका आधा भी करें या आधा भी छोड़ो, 30 to 40,000 भी अगर हमने इनकम जनरेट कर ली तो भी वेल एंड गुड है। तो सबसे पहले ये चीज़ें तो हमने देख ली। और अगर बात करें तो कंपनी डायनिनो, TR रिवॉल्यूशन और पार्टनर है एसएफ टिकट्स, वो सब छोड़ो। एसएफ टिकट स्पेशलाइजेस इन प्रोवाइडिंग द बेस्ट फ्लाइट डील्स दैट आर नॉट अवेलेबल ऑनलाइन। अभी हमको इसमें क्या मिलने वाली है, जब आप अप्लाई करोगे तो आपको क्या क्या चीज़ मिलने वाली है। सबसे पहला, अनलिमिटेड इनकम। इट इज़ अ कमीशन बेस्ड इनकम। तो आप लगभग लगभग 1,000 USD तक कमा सकते हो। और जो टैलेंटेड रहेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेंगे, वो 2,000 से 2,800। ये तो छोड़ दो, हमने इतना भी अगर जनरेट कर लिया तो बहुत है। जियो फ्रीडम, यू कैन मेक सेल्स फ्रॉम एनी लोकेशन वर्ल्ड वाइड। कहीं से भी काम कर सकते हो, रिमोट लोकेशन है। मेजोरिटी ऑफ आवर क्लाइंट्स कम फ्रॉम USA एंड देयर फॉर आवर शिफ्ट स्टार्ट फ्रॉम 6 AM PST। तो जैसे कि इसका इनका मार्केट बेस पूरा USA पे है, तो उनके टाइम जोन के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। फ्री ट्रेनिंग, जब आप अप्लाई करोगे, सेलेक्ट हो जाओगे, तो आपको लगभग 1 हफ्ते से 2 हफ्ते की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, पहले ये क्या काम करना है, उसके बाद ही आप इनकम जनरेट कर सकते हो। Who we are a part of Dynino Group and have built several successful consumer ब्रांड इन एयर टिकटिंग, जैसे कि ट्रैवल बेस्ड है, तो ये सब छोड़ो। कब आप अप्लाई कर सकते हो, रोल के लिए आप फिट कब हो। सबसे पहले तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, PC होना चाहिए अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ। स्किल्स, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, वैसे सब भी सीखना चाहते हैं, कमाना है तो। और एज आपकी मिनिमम 18 तो होनी चाहिए। और कैसे हमें अप्लाई करना है, सबसे पहले तो एप्लीकेशन फ़ी कुछ भी नहीं है, कम्प्लीटली फ्री है। प्रोसीड कैसे करना है, सबसे पहले तो हमें अप्लाई करना है। एक असेसमेंट मिलेगा हमको, तुरंत ऑन द स्पॉट मिलेगा, और उसका जो रिज़ल्ट है वो लगभग विद इन 24 आवर्स के अंदर ही आ जाएगा। तो हम अभी आपके सामने ट्राई करेंगे क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अगर आपको सेम आएंगे तो नोट डाउन कर लेना, डिफरेंट आए तो एक मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर। सक्सेस स्टोरीज, और ये कुछ मीडिया रैंकिंग्स दी हुई है, किन किन ने दिया, ट्रैवलर के इकोनॉमिक टाइम और ट्रैवल डेली न्यूज़। ठीक है, जान दो, हम इसको अभी सबसे पहले कर लेते हैं अप्लाई। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री भर लेनी है आपको, सिटी ऑफ रेसिडेंस इंडिया, इंडिया नहीं है क्या, सिटी मुंबई, ईमेल डाल लेते हैं हम। स्टेप 2 है, अपने बारे में बता दो थोड़ा, लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस या नो एक्सपीरियंस, जो भी है आपके पास, 5+ एक्सपीरियंस तक, जो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से सेलेक्ट करना है कर लो। एजुकेशन लेवल, स्कूलिंग है, प्रोफेशनल है, कॉलेज डिग्री, बैचलर्स, मास्टर्स, डॉक्टरेट, पोस्ट यूनिवर्सिटी, हम अब सेलेक्ट कर लेते हैं बैचलर्स। इंग्लिश लेवल, नेटिव, एडवांस, एडवांस सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ऐड लैंग्वेज में ऐड करके आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको और भी कोई लैंग्वेजेस ऐड करनी है। नहीं करनी तो कोई बात नहीं, हम नहीं कर रहे। कोई 5 स्किल सेलेक्ट कर लो,
एनालिटिकल स्किल्स डाल लेते, एक नीचे से चलते, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, लॉजिकल थिंकिंग, गोल ओरिएंटेशन। ठीक है, 5 ही लेता है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। लेट्स सी इफ़ वी आर अ मैच। फोर्थ स्टेप, आंसर्स इसके लगभग सब यस यस ही होंगे। क्या है? ड्रीम प्लॉट एलिजिबिलिटी टेस्ट। प्रोवाइड योर honest answers to let us assess if you are a proper match for becoming part of our Dreamport. सबसे पहला, आर यू फाइन विद कमीशन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड मेक फ्रॉम $1,000 अ मंथ? यस, कमाने का है। टू बी एबल टू प्रोवाइड योर सर्विसेज टू आवर क्लाइंट यू नीड टू हैव अ पीसी लैपटॉप, है हमारे पास। टू बी एबल टू प्रोवाइड योर सर्विसेज टू आवर कस्टमर्स you need a quiet place so you can stay focused while delivering our services. Do you have a suitable workplace? Yes. इंटरनेट कनेक्शन 20 Mbps का लगभग है। हमारा सबसे बड़ा मार्केट है यूएस। अब यूएस में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, कर सकते हैं। आर यू डेडिकेट रेडी टू डेडिकेट 2 वीक टू योर लर्निंग? कर देंगे। काइंडली नोट दैट यू विल बी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर ड्रीमपोर्ट राइट आफ्टर पासिंग द लर्निंग स्टेज। ओके। A travel manager is a contractor engaged under a freelance services agreement. A contractor is not entitled to receive vacation, sick pay, retirement, or profit sharing. Additionally, as a contractor, will pay your taxes according to your country's legislation yourself. Please confirm that you agree with such form of agreement. Yes. लगो इसके आंसर सब ऐसे होंगे, फिर भी पढ़ के कर लेते। To be eligible for the freelance opportunity, you should be aged over 18. Please confirm that you qualify in terms of age. Okay. Can you dedicate 35 hours weekly to Dreamport to ensure your efforts are paid with corresponding results? Yes. To qualify, you must not be on any sanction list and should have no criminal convictions in the past 5 years. Do you confirm compliance with this requirement? हाँ भाई, हमारे ऊपर कुछ केस वेस नहीं है भाई, ईमानदार लोग हैं। Let's see if you are a match. Check your email to access your login credentials. कुछ आया क्या? अब तक तो कुछ भी नहीं आया। स्पैम भी चेक करने बोल रहा है ये, स्पैम भी देख लेते हैं। स्पैम में भी कुछ नहीं आया। मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी पे ओपन कर रखा है आपको दिखाने के लिए, अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नहीं आएंगे हमको तो चैट जीपीटी से सॉल्व करवा लेंगे। आया क्यों नहीं मेल अभी तक? तो फाइनली गाइस हमारे पास आ चुका है मेल इनका ड्रीमपोर्ट का। लगभग 15 मिनट्स लगे, 15 मिनट बाद आएगा तो थोड़ा वेट करना। तो इनका ऐसा मेल आ चुका है। डियर गोपाल वर्मा, हियर इज़ व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट टू कंटिन्यू। लॉगिन आईडी और क्रेडेंशियल्स दिए हुए हैं और ये क्रेडेंशियल्स एक्सपायर हो जाएंगे 7 दिन के अंदर। नो इंटरव्यू विल बी शेड्यूल। सबसे बढ़िया बात, टेस्ट पास करो, जॉब उठाओ, ट्रेनिंग लो। तो सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं GV220 और पासवर्ड क्या है कॉपी कर लेते हैं। कंटिन्यू। योर पासवर्ड हैज़ एक्सपायर्ड। ठीक है, एक बार हम पासवर्ड भी चेंज कर लेते हैं।
नया पासवर्ड दे देते हम इसको। पासवर्ड अपडेटेड। अच्छा, यूज़र नेम फिर डालना पड़ेगा GB220। तो हमने पासवर्ड जो दिया था उन्होंने एक्सपायर हो गया था, न्यू पासवर्ड सेट किया। अरे अभी कोड आएगा क्या? तो गाइस मोबाइल पे कोड नहीं आया था, तो मुझे एक बार वापस ऑप्शन मिला था। तो मुझे एक बार वापस ऑप्शन मिला था क्या कोड ईमेल के ज़रिए रिक्वायरमेंट, तो मैंने ईमेल पे ले लिया, कोड कॉपी किया, कंटिन्यू। You need to pass several steps before gaining full access to the system. Your first step starts here. We invite you to undergo a general knowledge assessment. Our applicants require an average of 30 minutes to complete it. ठीक है, 30 मिनट का टेस्ट है, but we recommend setting aside more time to avoid rushing. The assessment must be completed in one go, so please start it at a convenient moment when you have enough time. अभी स्टार्ट कर देते हैं। कुकीज़ को एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, नेक्स्ट। लगभग 36 मिनट की टेस्ट होने वाली है, जिसमें 3 सेक्शंस होंगे। द असेसमेंट इज टाइम, ठीक है। बिफोर ईच टेस्ट देयर मे बी प्रीव्यू क्वेश्चंस। बी अवेयर द टाइमर फॉर द टेस्ट विल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। अगर टाइमर है तो चैट जीपीटी का यूज़ हमें संभल कर करना पड़ेगा, कहीं भी ज़रूरत पड़ी तो। कुछ कुछ जगह पे ऑडियो क्लिप्स भी होंगे जिसको सुन के हमें फिर करना है, कहीं कहीं पे तो नहीं। यू आर फ्री टू यूज़ कैलकुलेटर पेन पेपर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अभी हम। हाँ, इंग्लिश आती है हमको। डू यू हैव अ कंडीशन दैट अफेक्ट योर मेमोरी और कंसंट्रेशन एबिलिटी सच एज ADHD? कुछ नहीं हमको। इफ़ यू डोंट कंसिडर कंडीशन टू बी हिंड्रेंस व्हेन टेकिंग अ टेस्ट यू कैन आंसर नो टू इंजू। अरे नो, हमारे अंदर कुछ भी कमी नहीं है। अभी असेसमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें मैं कैमरा भी ऑन रखना होगा, ठीक है। कैमरा टेस्ट हो रहा है क्या? कंटिन्यू कर लेते हैं। ओह, फुल स्क्रीन है, मतलब हम कुछ भी चीटिंग नहीं कर सकते। दिस इज़ द फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। चार्ली वॉज अ फ्लाइट अटेंडेंट डैश 7 year for 7 years. Next, we dash the new Spider-Man movie 4 times already. We have seen. After going to the supermarket 3 times today, Adili is not feeling up to going again. Adili want to go and buy food at the store. Yesterday we had 40 customers, and today we have 13. Yesterday we had 40 customers, and today पहले 40 फिर 13, 53। अभी असली टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। Whatever we do, it is important that we dash a decision as a team. Whatever we do, it is important that we take decision as a team. The meeting is going to start. Jesse and Richard wondered where their cousin had been on vacation. To had been on to vacation, on vacation शायद। Last year Ben
Visited, visited London 3 times. The flowers dash the woman gave me a beautiful. The flowers that the woman gave me a beautiful. I dash swimming every weekend. I used to go to swimming every weekend, but now it's difficult with 2 children. Larry dashed the piano for 20 years. Fill in the blanks by typing a form of the verb to play below. Larry the piano was for 20 years. He's very good. Larry has been playing the piano for 20 years. Is your office the dash the third floor? On the third floor? Yeah, in the third floor. Is your office on the third floor? The teacher had to shout loudly to be heard. Behave yourself. Try not to leave dash any important detail in your description. Try not to leave off any important leave out leave off मेरे हिसाब से. Even though it was raining, the baseball team found a way to beat their opponents. The rain was coming down hard, but the player was still able to see the ball. The baseball game was cancelled due to the weather falls. वो तो खेल रहे थे. A new children book containing funny poem came out last week. It is authored by Shirley Thomas and illustrated by Bill Bailey. There were a dozen roses on the table when Mark came home from work. They were so fragrant that he could smell them when he walked into the house. How many roses did Mark find when he came? There were a dozen roses. एक डजन में 12 केले. If there is a fire, all hotel guests must take the stair on the south side of the building. Do not take the elevator on the north side of the building. The elevator are located on the south side of the hotel. The stairs are located on the if there is a fire, all also must take the stair on the south side of the building. The stairs are located होगा तो यही एलिवेटर नॉर्थ साइड में है क्या नहीं. Due to Molly's fear of crowd, she was unable to go to the concert of her favorite band. She was very disappointed, but hopefully the band will play at a smaller venue next time. Molly went to the concert of her नहीं वो जा Martha ही नहीं really पाई. likes to take walks on the beach with her Molly में dog. क्या है? Unfortunately, she doesn't have any availability in her schedule until next week to go. Martha really likes to take walks on the beach with her dog. Unfortunately, she doesn't have. Carol and Carlos went to the movie theater last week to see a movie about a football team. Carol thought that the movie was wonderful, although Carlos didn't agree. He thought that it was boring. Carol and Carlos went to the movie theater last week to see a movie about a football team. Carol thought that the movie was wonderful, although Carlos didn't agree. He thought that it was boring.
Carol was worried that she wouldn't get to the airport on time for her flight to New York. She got to her gate on time, despite the fact that there was a lot of traffic. Carol was worried that she wouldn't get to the airport on time for her flight to New York. She got to her gate on time, despite the fact that there was a lot of traffic. Daryl really enjoys drinking green tea, jasmine tea, and black tea. Lately, he has been trying to limit drinking beverages with a lot of sugar. Why will Daryl probably not order a soft drink today? Earlier today, there were only a few cars in the parking lot, but Sugar now there are consumption कम 40. करना. How many cars are in the parking lot now? सुनते हैं. 40. Finish. एक टेस्ट हो चुका है हमारा दूसरा नेगोशिएशन. You work for a plastic manufacturing company and are negotiating with supplier X to sell you dye. Supplier X has the best dye, but supplier Y also sell dye, though offer slightly lower quality. If you cannot negotiate a suitable price with supplier X, you are prepared to get your dye from supplier Y. ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं. यू आर मीटिंग विद अ न्यू सप्लायर फॉर द फर्स्ट टाइम टू नेगोशिएट अ सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेयर मशीन्स. ठीक है, ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है. टोटल 16 है. You are a book retailer preparing to move your business online. You are considering building an e-commerce platform that you can launch in 6 months and are currently negotiating with an e-commerce platform provider that will immediately bring you online selling capability. The provider requests a 5% commission on each transaction, but you do not want to exceed a 4% commission. The negotiation has reached an impasse. We have a viable plan to build our own platform need and have it running by the end of the year. We have a viable plan to build our own platform within 6 months, but if you accept a 4% commission, we will work with you. We have a viable alternative platform that we are prepared to implement, but I would prefer an agreement. ठीक है. One of our regular customer urgently want you to accelerate an order. You ask about the reason for the urgency, but they change the subject. You ask again. This time they mention sometime vague about a reprioritization of project. Though you have the capacity to accelerate the order, it may require adjusting other order timelines and could lead to increased cost on your end. Tell them that acceleration of the order is unfortunately not possible and reference the originally agreed delivery date. Think of a possible reason the order must be accelerated and ask whether this is the reason for urgency. Ask what they mean by reprioritization of project. You have to negotiate a three-way deal with two partners, A and B. A has the greatest financial and operational influence over the project. Partner B is a much larger company than partner A. You are negotiating a service agreement with your client. Your client has just made a very aggressive demand in terms of service quality, which you are not prepared to agree to. However, you really need this contract and you are under pressure to arrive at an agreement.
I would like to take some time to think more about your interest. Let's break here and meet up tomorrow. That request does not work for me. Let's break here and meet up tomorrow. In the meantime, let's both think about how to be more flexible. That request does not work for me. I need to think more about this. Let's take and meet tomorrow. I would like to take some time to think more about your interests. Let's take a break and meet tomorrow. Your photocopier supplier quoted 5,000 for a maintenance contract. Your counter offered with the $4,000. After much negotiation, your supplier finally said they could consider 4,000 if you committed to purchasing a minimum of 1,000 boxes of paper from them. You purchase much more than this quantity of paper in a year. Their paper prices are 10% higher than the average price in the market. You work at a manufacturer of domestic cleaning product. You have an existing annual supply contract with a supermarket which is up for renewal. You are negotiating your price and annual volume discount with the supermarket chain. The supermarket has just demanded a price reduction of 2% compared to last year contract, though the rate of inflation is currently 1.2%. You are the head of human resources. One of your direct report has recently been promoted and has just found out they are paid 8 to 12% less than several of their peers. You are fairly certain they will come to you within the week to ask for a salary increase. Which of the following strategy will best limit the raise you will likely to need to give them? Tell them you are considering raising their salary and ask them to propose a reasonable increase. Offer them a 5% raise before they come to speak with you. Wait until they come to you, then offer them. Tell them you are considering raising their salary and ask them to propose a reasonable increase. You receive a call from a paint supplier who explain that their paint prices will increase starting with your next shipment. You work well with your supplier and you were expecting an increase in price. However, the increase is unacceptably high for you. Explain that you will need to terminate the supply contract and go to the supplier that they are being unreasonable and you will not negotiate if they do not act in good faith. Your negotiation counterparty has just proposed two opinion to you and asked you to choose. Each option has a different price per unit, a different guarantee duration for the product, and different maintenance provisions. You have arrived at an impasse in a negotiation after both sides have laid out their respective argument. Which strategy should you use to move past this impasse? Put a deadline on your proposition, indicating that you may not be able to offer such favorable terms after the deadline passes. Ask for a break in the negotiation without identifying the time or date when you will return. Repeat your strongest argument. You work for a frozen product food producer and are negotiating with a supplier for a vital ingredient in your product range. You need to negotiate the price per kilogram. The supplier want to lock you into a minimum number of kilogram per year since delivery is uneconomical at low volume. You are negotiating to win a canteen catering contract for a large company. इसी तरह से you are in a meeting with your supplier who has just threatened to suspend all deliveries
unless you accept a 10% increase in price. Your supplier know that this increase would cause major expense and disruption to your business. Explain that you do not react to threat. Tell them if they remove the threat, you are open to talking about price. You receive raw material from a supplier. The last batch delivered had a quality deficiency, which was proven to have led to the breakdown of a machine in your factory. You are in negotiation with the supplier for compensation. Yesterday, your supplier agreed to compensate you. Today, you met again to continue negotiation on other operational matter. However, your supplier denied that you have even discussed compensation yesterday. You know full well that we discussed compensation for the machine yesterday. It seemed to me you are acting in bad faith. Why would you pretend that the discussion about compensation for the broken machine didn't take place? I have a different memory of our conversation yesterday. If you do not agree to compensate us for the broken machine, we will consider legal action. बैक का भी कुछ ऑप्शन है क्या नहीं? You have an online marketing contract with Isra company. Isra just called you to tell you that the last marketing campaign was not as successful as they have hoped, and they blame your work. Isra asks for a free discount, then list everything they think you are not doing well. Make a summary of a business interests, approach each criticism individually, stating with the worst. You run an event company. You recently ran a trade fair for an association that represent high-tech company. You are negotiating extra fees because the association invited 2000 more participants than the association communicated to you, which means that you incurred last minute costs for additional security and logistics. The association representative says this organizational mess was because you didn't plan the event thoroughly enough, went away to extra any fees. There was no organizational mess. There were security and logistical issue because 2000 more participants that you communicated to us attended. फर्स्ट ऑप्शन फिनिश. तो हमारा दो पार्ट हो गया. बी टू बी टेलीसेल्स. You work for a fitness center that maintains a database containing exhaustive information. इतना टाइम नहीं हमारे पास पढ़ने का. आप लोग ज़रा अच्छे से ध्यान से पढ़ के देना. इसमें भी 11 मिनट 16 क्वेश्चंस. You are one of 5 employees at an agency who invite leads to free networking event and then follow up with attendees to pitch the agency services. You invite 250 warm leads every week. Usually 120 people register and 50 actually attend. Your target is to enroll 10 clients per week during your follow-up calls. Although you have a maximum weekly capacity of inviting 250 leads, you never hit your sales goal. What should you do to improve the CRM data accuracy? You work for a private asset bank department weekly. You call an existing list of clients to introduce new investment opportunity. You receive training on how to search for the weekly client list inside the bank's CRM system and report your progress. However, the CRM involve many client advanced criteria and is time consuming for you to use. Ask the manager whether you can delegate the client list search and focus on calling and sending your report by email. Spend more time navigating inside the CRM. Ask a colleague with similar task about the level of understanding. Request a second CRM training where you. चलो हम इसको फटाफट अभी कंप्लीट कर लेते हैं.
तो हम हमारी फुल विंडोज़ से बाहर आ चुके हैं। असेसमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसका रिज़ल्ट कितने दिन में आएगा मैं उसका आपको स्क्रीनशॉट बता दूंगा। क्या क्या आया था, टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दूंगा मैं आपको, वहाँ जाके आप स्क्रीनशॉट चेक कर सकते हो क्या रिज़ल्ट क्या आया। तो इसी तरह से आपको टेस्ट देना होगा। हम ऊपर क्लिक करके विंडो शायद से छोटी भी कर सकते थे, वो मुझे पता नहीं, वो एक बार आप ज़रा देख लेना। अगर हो पाया तो चैट जीपीटी से भी आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को करते हम यहीं पे ख़त्म। एक बार आप असेसमेंट दे देना। इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं लेकिन मेजरली यही होंगे, सिचुएशन बेस्ड ही होंगे। 36 मिनट्स के लिए 16 16 16 48 क्वेश्चंस। तो सोच समझ के अच्छे से, जब आपका माइंड एकदम पीसफुल होगा तभी देना, माइंड सेट सही रख के। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपसे अगली बार अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।